Hello everyone, welcome to all of you in FFB Live Chemistry class. इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है जिसमें पिछले क्लास में हेट्रोजीनियस एंड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में किस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और ये रेट कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखी। आज के क्लास में हम extent of reaction and equilibrium constant and La-Chatelier प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम के बारे में करीब करीब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे ही रिलेटेड ये प्रिंसिपल है जो फिजिकल और केमिकल दोनों फिनोमेनों पे लागू होता है। तो आज के क्लास पे हम extent of reaction and equilibrium constant और and La-Chatelier प्रिंसिपल, इन दो चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। Now first we see on extent of reaction and equilibrium constant। बहुत साफ नहीं आया लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है, चाहो तो नोट भी करते जाओ। The magnitude of the equilibrium constant K indicate the relative amount of the product and the reactants. Large magnitude of K indicate that larger amount of products are formed by the time equilibrium is established, and smaller value of K indicate that the at equilibrium lesser amount of product are present. Now, if Kc is greater than 10 to the power 3, then products are dominant. That is, greater the value of K, nearer is the reaction to completion. फॉर एग्जाम्पल H2Cl2 गैसियस स्टेट में रिएक्ट करके HCl बनाते हैं गैसियस। इनके लिए Kc की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर 31 एट 300 केल्विन, यानी Kc है मोर देन 10 टू द पावर 3। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट तेजी से बनेगा, यानी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ तेजी से बढ़ेगा। उसी तरह दूसरा रिएक्शन एग्जाम्पल है H2Br2 गैसियस स्टेट में बनाते हैं HBr गैस। इसके लिए Kc है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 18 इज मोर देन 10 टू द पावर 3। तो सो दिस रिएक्शन इज गोज फॉर द कंप्लीशन, यानी तेजी से प्रोडक्ट हमें मिलता जाएगा। इसी तरह तीसरा रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 गैसियस स्टेट में, यानी हीट करने पे या बर्न करने पे बनता है वाटर वेपर बनती है, और उसके लिए Kc होता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 47 एट 500 केल्विन। तो यहाँ क्या है, Kc is greater than 10 to the power 33, then the products are dominant. If Kc is less than 10 to the power minus 3, then reactants are dominant, यानी product तेजी से नहीं बनेगा। In the reaction mixture, that is when K is very small in magnitude, the reaction rarely proceed and it has go to a long way for completion, यानी बहुत टाइम लगाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने में। जैसे कि N2 प्लस HO2 रिएक्ट करता है गैसियस स्टेट पे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। इसके लिए Kc है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -31 at 298 Kelvin, which is like this. Kc is less than 10 to the power -3। तो रिएक्शन जो है बहुत धीरे धीरे प्रोसीड करेगा और इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। इसी तरह H2O डिसोसिएट होगा जब H2O2 में, तो उसके लिए Kc होता है 4.1 इंटू 10 टू द पावर -48 at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। Now, if the value of Kc lies in the range of 10 to the power -3 to 10 to the power 3, then appreciable amount of reactant and product are present like this. H2I2 to form 2Hi, Kc is equal to 57,
when N2O4 dissociate into NO2 and then Kc is equal to 4.64 into 10 to the power minus 98। इसी तरह इस रिएक्शन में भी Kc की वैल्यू 138 एट 298 केल्विन। तो ये क्या होंगे, एप्रेसिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे। Thus, the value of equilibrium constant enable us to tell roughly the extent to which a reversible reaction will proceed before equilibrium. Now we see these points with the help of some example. Here are some reactions and their equilibrium constant. ये reaction दिया है, मीथेन गैसियस स्टेट से एथेन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। Kc इसके लिए 9.5 into 10 to the power 3। दूसरा रिएक्शन है, इसके लिए दिया हुआ है Kc की वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद ये तीसरा रिएक्शन है, H2 plus Br2, तो ये 2HBr यहाँ पे Kc is equal to 2 into 10 to the power 9। Arrange these reactions in order of their increasing tendency to go towards completion। Solution क्या होगा, greater is the value of equilibrium constant, nearer is the reaction to completion, thus the increasing tendency of reaction to go towards completion। यानी सबसे ज़्यादा इस ए सबसे कम ए कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, फिर सी, फिर बी, तीनों की के वैल्यूज से कंपेयर करने पे हमें ये रेशियो मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेंड टू प्रोसीड फारथेस्ट फ्रॉम कंप्लीशन। इस रिएक्शन के लिए Kc है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। इस रिएक्शन के लिए है Kc इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर, एंड इस रिएक्शन के लिए है BrCl से Br2Cl2 डिसोसिएट हो रहा है, तो Kc इक्वल टू 1.45। अब द रिएक्शन बाय रिएक्शन देख सकते हैं। द रिएक्शन H2G प्लस Br2 से 2HBr गैसियस स्टेट बन रहा है, जिसके लिए Kc है 1.4 इंटू 10 टू द पावर minus 21, the lowest value of equilibrium constant, hence it will be farthest from completion, यानी बहुत ही मुश्किल से completion की तरफ जाएगा, जिसके लिए कि Kc की वैल्यू सबसे कम होगी। इन तीनों में सबसे कम Kc वैल्यू इस रिएक्शन की है, ये वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। The mass action ratio, which is known as concentration quotient. This can predict the direction of reaction. Let us consider now reversible reaction A plus B C D. तो mass action ratio is equal to C into plus D है, तो C into D upon A। B होगा, this is known as concentration quotient or mass action ratio। Now definition is that ratio of product of concentration of products to the product of concentration of reactant is called mass action ratio। Q is equal to Kc when concentration is taken in terms of molecule per liter, and Q is equal to Qp when partial pressure is taken in place of concentration, this and this। Now one Q, mass action ratio is equal to K. K is a equilibrium constant, then reaction is at equilibrium and rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। इस तरह से जबकि Q होगी की वैल्यू K से ज़्यादा है, तब रिएक्शन किधर रिएक्शन प्रोसीड राइट टू left, when Q is equal to less than K, reaction proceed left to right, and equilibrium दोनों रिएक्शन की रेट
बराबर होगी जहाँ पे Q इज इक्वल टू K होगा इस टाइम के लिए। प्लॉट है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट और टाइम के बीच में। नाउ व्हेन, जो अभी तुमने डायग्राम में देखा ग्राफ में, वही चीज यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। When Q is greater than K, then the reaction is not at equilibrium and it will be fast in backward direction. That is, rate of forward reaction is less than rate of backward reaction. Second, when Q is equal to less than K, then again the reaction is not at equilibrium and it will be fast in forward direction. The rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction. इसको इस तरह से हम डायग्राम में भी समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ जब QC की वैल्यू जो है वो कम होगी KC से, इस तरह से, तो नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड व्हेन QC इज इक्वल टू KC बराबर, then no net reaction, the reaction is at equilibrium. And when, third point, when QC is more than KC, like this, then net reaction goes from right to left. Now some example are here on the basis of these discussion. At certain temperature, Kc is equal to 0.18 for the equilibrium. PCl3 plus PCl2, PCl5 gaseous state में at equilibrium. At a certain instant, PCl3 एक्टिव मास दिया हुआ है, Cl2 का इतना है, PCl5 का. Is the system in a state of equilibrium? If not, in which direction the reaction will proceed to come to equilibrium? तो जब क्लास कर रहे हो बैठ करके, तो इन कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो क्वेश्चन आ रहा है सामने उसको नोट करो और उसको हल भी करो, या नोट होना चाहिए, बाद में भी हल कर सकते हो। सॉल्यूशन Q के लिए हो जाएगा PCl5 अपॉन PCl3 PCl2 रिएक्शन के हिसाब से। सारी वैल्यूज रखा तो हमें Q की वैल्यू आई 4.96। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि Q इज ग्रेटर देन KC, thus the reaction is not at equilibrium and it will proceed in backward direction to attain equilibrium. Another example, at 460 degrees centigrade, the reaction sulfur dioxide plus NO2 react to form nitric oxide and sulfur trioxide. Here Kc is equal to 85. A reaction flask at 460 degrees centigrade contains these gases at the following concentration. Active masses दिए हुए हैं NO के, NO2SO3. Is it at equilibrium? If not, in which direction will a spontaneous change occur to go to equilibrium? तो पहले हम equilibrium mass quotient निकालेंगे QC, सारी वैल्यूज पुटअप किया तो QC आ गया। यहाँ क्या हमने देखा, QC is greater than KC. Then the reaction is not at equilibrium. The reaction will proceed spontaneously in backward direction to go to the equilibrium because QC is greater than KC. The other example, at 448 degrees centigrade, the equilibrium constant Kc for the reaction H2 plus I to 2HI gaseous state is equilibrium constant Kc is equal to 50.5. Predict the direction in which the reaction will proceed to reach equilibrium at 448 degrees centigrade. If we start with 2.0 into 10 to the power minus 2 mole of Hi, 1 into 10 to the power minus 2 mole of H2 and 3 into 10 to the power minus 2 mole of I2 in a 2L container, तो आपको एक्टिव मासेस निकालने होंगे, Hi का, H2 का, I2 का, इस तरह से निकाल लिया। उसके बाद कंसंट्रेशन क्वोशिएंट पे आ जाए, Q इज इक्वल टू HI अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होल Q अपॉन H2 I2 हो जाएगा। सारी वैल्यूज रखने पे Q का की वैल्यू आई 1.33। सिंस Q इज लेस देन KC, the reaction will proceed in the forward direction or into attain
in order to the reaction will proceed in the forward direction in order to attain equilibrium, so that Q becomes equal to Kc. Another example, the equilibrium constant at 278 Kelvin for the reaction CuAg ion, तो Cu2 प्लस एक्वस हो जाता है, ये दोनों एक्वस में थे, पहले ये एक्वस था, फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2.0 into 10 to the power to the power 15 in a solution in which copper has displaced some silver ions from the solution. The concentration of copper ion is 1.8 into 10 to the power minus 2 mole per ml, and the concentration of Ag plus ion is 3 into 10 to the power minus 9 mole per liter. Is the system at equilibrium? दोनों रिएक्शंस तो इस तरह से किया हुआ है। कंसंट्रेशन रेशियो निकालना है हमें इस तरह से रख करके सारी चीजें, तो ये सारी वैल्यूज दी हुई थी, इसको हम रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 into 10 to the power 15. Since the value of K is equal to K, the system is at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction H2I2 2HI is 0.35 at 298 Kelvin. In the following mixture at 298 Kelvin has equilibrium been reached? If not, state on which side of the equilibrium the system is. pH2 is equal to 0.10 atmosphere and pHi 0.80 atmosphere. Here there is solid iodine in the container, and pH2 is equal to 0.55 atmosphere and pHi 0.44 atmosphere. There is solid iodine in container, and pH2 is equal to 2.5 atmosphere, pHi is equal to 0.15 atmosphere. There is solid iodine in container. The reaction is this, ये सॉलिड में कन्वर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये I2 गैस है और ये आयोडीन सॉलिड है। Pi2 is assumed as 1 atmosphere in each case as iodine is present in solid state. Now the Qp for the above reaction pHi whole square upon pHi हो जाएगा, pHi is equal to this एंड QP हो जाएगा, डेट सारी वैल्यूज रखने पे 6.4, तो QP is greater than KP. The reaction has gone more towards the forward side. In the second case, PHI PH2 दिया है, QP इस तरह से निकाल लेंगे, KP is equal to QP, QP is equal to KP. The system has attained equilibrium. In third case, PHI PH2 QP निकालेंगे, the QP is less than KP. The equilibrium has not been attained. Now the most important topic of the chapter is Le Chatelier's principle, जो कि इक्विलिब्रियम के लिए ही प्रपोज किया गया था, जिसको कि ले चेटेलियर ए फ्रेंच केमिस्ट ने प्रेजेंट किया था। There are three main factors which can change the state of equilibrium in reversible system. These are concentration, pressure and temperature. Le Chatelier, a French chemist, presented a qualitative principle known as Le Chatelier's principle, which can describe the effect of change in concentration, pressure and temperature on any reversible system, either physical or chemical. According to this principle, एक बार क्यों नहीं बढ़ सकता? According to this principle, if a system at equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shift to the direction that tends to undo the effect of change. Or the second definition,
If a system at equilibrium is subjected to a change of any one of the factors, such as concentration, pressure, or temperature, the system adjusts itself in such a way as to annul the effect of the change. नाउ सी अब हम एक के बाद एक देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है. If an additional amount of a reactant or product is added to the system, the stress is relieved as the reaction that consume the added substance occur more rapidly than its reverse reaction. That is, if any of the reactant is added, the rate of forward reaction increase, and if any of the product is added, the rate of backward reaction increase. In general, in a chemical equilibrium, increasing the concentration of the reactants result in shifting the equilibrium in favor of products, while increasing concentration of product result in the shifting the equilibrium of the favor of reactants. The effect of change in concentration can be explained on the basis of following reaction. Fe3 प्लस एक्वा सोल्यूशन में फेरिक क्लोराइड प्लस कलरलेस सोल्यूशन है ये HCN एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो रेड इज ब्राउन. FeSCN2 प्लस का ये रिएक्शन कंप्लीट होने पे बनता है. दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है. अब इसमें हम सर्टेन कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट देखते हैं. To the above equilibrium, when some quantity of potassium sulfocyanide, this is potassium sulfocyanide, is added, the color of the solution darkens, showing that the concentration of FeSCN2 plus ion has increased. The equilibrium shift towards right side similarly by adding ferric chloride. Ferric chloride है. Ferric chloride, the color of the solution depends due to the formation of more FeSCN2 plus ions. Thus, on increase in concentration of either HCN ion or ferric ion, that is reactant, the rate of forward reaction increase add to relieve the system from the effect of the increase in concentration of HCN or Fe3 plus. This is accordance with Le Chatelier principle. Again, if to the solution a small amount of potassium ferrosulfocyanide is added, the darkness of the solution decreases by increasing concentration of FeCNS ions. The reaction moves towards left hand side in order to decrease the concentration of added FeCnS2 plus ion. Thus, the equilibrium shift towards reactant. This is the explanation of Le Chatelier's principle. In case of system involving gaseous substances, the concentration are taken as partial pressure of the substance. Now, the effect of change in concentration on equilibrium can be illustrated with some example from everyday life. First, faster drying of clothes when there is a breeze or when we keep on shaking it. Why? On shaking the cloth or when there is a breeze, the water vapors of the nearby air are removed. In order to re-establish the equilibrium, the wet cloth lose more water in the vapor state to saturate the surrounding air and hence gets dried. Second example, sweating is more on a humid day, but a fan provides relief. When the surroundings air has large amount of water vapor, water from the skin does not evaporate quickly. That is, sweating occurs. However, a fan helps by removing water vapor from the area near the skin. Thus, the evaporation starts from the skin in order to re-establish equilibrium. This is the principles of, this is the application of Le Chatelier principle या जिसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं.
नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यहाँ पे भी ले चैटेलियर प्रिंसिपल लागू होता है. इन द inhaled oxygen combined with hemoglobin in the lungs according to the following reaction. Hemoglobin reacts with oxygen to form oxyhemoglobin at equilibrium reaction, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूट करके ब्लड में ऑक्सीजन भी देता रहता है. In the tissues, the partial pressure of oxygen is low, and when high oxyhemoglobin reaches the tissue, the equilibrium shifts toward left so that the sum of the oxyhemoglobin breaks. इस तरह से रिवर्स रिएक्शन हो जाता है. Up with the release of oxygen, the same blood when returns to the lungs on account of high partial pressure of oxygen there, the equilibrium favors the formation of oxyhemoglobin. In this way, oxygen is supplied to every part of the body with the help of blood. Now, fourth example is removal of carbon dioxide from the tissues by blood. The equilibrium is CO2 H2O liquid से react करके carbonic acid aqueous बनाती है. This is equilibrium with H plus and carbonic ion. Now, carbon dioxide dissolve in blood on account of high partial pressure of carbon dioxide in tissues. The same blood when comes to lungs release the dissolved carbon dioxide as the partial pressure of carbon dioxide is low here. Now, sweet substance cause tooth decay. Sweet substance खाने पे दांत खराब हो जाते हैं, है ना. तो स्वीट सब्सटेंस का टूथ डिके, तो इसको इस लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. An enamel of insoluble substance called hydroxyapatite CA5PO4 whole thrice OH is present in the form of a thin coating on our teeth. It exists in equilibrium with its ion in the mouth like this. डीमिनराइजेशन और रीमिनराइजेशन, यानी ये सब जुड़ करके फिर से इसको बना लेते हैं. ये रीमिनराइजेशन और डीमिनराइजेशन, ये अलग अलग मिनरल्स में टूट जाते हैं. कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. अब आगे क्या होता है? द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. डीमिनराइजेशन इज टर्म डीमिनराइजेशन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड mineralization. When sugar substance are taken, these are absorbed on teeth, and if not removed, these get fermented producing H plus ions. H plus ions प्रोड्यूस होगा तो किससे रिएक्शन कर लेगा? OH आयन से. Thus, H plus ions disturb the above equilibrium by combining with O plus OH ion. तो ये इक्विलिब्रियम में है ये रिएक्शन, तो O H प्लस जब OH माइनस से रिएक्शन कर लेगा तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. To form water, combining with OH ion to form water, the H plus ion disturb the above equilibrium by combining with OH ion to form water and with phosphate ion to form hypophosphoric porous ion. Thus, the sweet substance shift the above equilibrium to the right side, thereby causing tooth decay. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि ला चैटेलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड थे. अब ये यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे हम इस पे डिस्कस करते हैं. ज़्यादा बड़ा हो जाता है. If a system in equilibrium consists of gases, then the concentration of all the components can be altered by changing the pressure. When the pressure on the system is increased, the volume decreases. Proportionality. The total number of mole per unit volume will now be more than before. According to La Chatelier principle, the equilibrium will shift to the direction in which
there is decrease in number of moles, that is toward direction in which there is decrease in value. In general, an increase in pressure applied to a system at equilibrium favors the reaction in the direction that produces lower number of moles of gases, and a decrease in the pressure favors the opposite reaction. If there is no change in number of moles of gases in a reaction, a pressure change does not affect the equilibrium. Now, high pressure favors the shift of equilibrium towards products. N2 plus 3H2 से जब अमोनिया गैस बनती है, then the high pressure favors the shift of equilibrium towards product की तरफ बनने में जो फेवर करता है. जब यहाँ इस रिएक्शन में प्रेशर हाई होता है, इसी तरह ये दूसरा रिएक्शन है, प्रेशर हाई होगा तो फॉर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने में ये फेवर करेगा. High pressure favors the shift of equilibrium toward reactants. इस रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन में हाई प्रेशर फेवर द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट की तरफ, यानी प्रोडक्ट स्लो बनेंगे और ये रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन जब प्रेशर हाई कर देंगे तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी इन दोनों रिएक्शंस में. There will be no effect of pressure as the number of moles of gases is the same on both sides of the reaction. Number of moles दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है, 1 2 और ये 2 2. तो यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gases is the same on both sides of the reaction. Now, effect of temperature. A chemical reaction reversible involves two opposing reactions, forward and backward. If one reaction is endothermic, the other will be exothermic in nature. When heat energy is added by raising temperature, the system can relieve itself from the stress if the reaction which absorbs heat moves faster. Endothermic reaction is always favored with increase of temperature. High temperature is favorable for forward reaction as there are endothermic in nature. Endothermic means जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके लिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा और जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी इस्टेब्लिश होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस रिएक्शन. Low temperature is favorable for forward reaction as these are exothermic in nature. जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उनके लिए लो प्रेशर फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए. जैसे ये दो एग्जांपल हैं सामने तुम्हारे. Now conclusion of the above system. Increase in concentration of any substance favors the reaction in which it is used. That is, increase in concentration of any of the reactant shift the equilibrium towards the right hand side, that is concentration of products increases. Increase in concentration of any of the products shift to the equilibrium towards left hand side, that is concentration of reactant increase. Now high pressure is favorable for the reaction in which there is decrease in value. Increase in pressure shift the equilibrium in the direction of lesser number of gaseous molecules, and decrease in pressure shift the equilibrium in the direction of large number of gaseous molecules. A rise in temperature favors the endothermic reaction. Increase in temperature shift the equilibrium in the direction of endothermic reaction. Now decrease in temperature shift the equilibrium in the direction of exothermic reaction. Now effect of temperature and pressure. It is लिस्ट दी हुई है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम पे या रिएक्शन पे क्या असर होगा. एक्सोथर्मिक में इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एन दैट इज साइड विथ फेवर मोल ऑफ गैस जीरो है तो कुछ नहीं होगा,
और इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर नो इफेक्ट होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा डेल्टा एंड साइड विथ फेवर मोल ऑफ गैसेस राइट एंड फॉरवर्ड शिफ्ट। इसी तरह से अभी जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में ये सारी लिस्ट दे करके शॉर्ट में याद करने के लिए बताया हुआ है। इस तरह से इसको नोट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह के रिएक्शन में क्या होगा। Now application of Le Chatelier's principle. This is the important point. Yes. Now application of Le Chatelier's principle. First हम physical equilibrium पे discuss करते हैं, उसके बाद हम chemical equilibrium पे। Physical equilibrium में ice water system, that is melting of ice. The change can be represented as ice plus ice को हीट करेंगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है ये, क्योंकि वाटर को भी हम चेंज कर सकते हैं वापस आइस में से ठंडा करके। In this change, heat is absorbed. That is, reaction is endothermic, and there is decrease in volume. According to Le Chatelier principle, the favorable condition for the melting of ice is high pressure and high temperature. The second example, water vapor system या vaporization of water. The change can be represented at water plus ये heat करेंगे तो ये water vapor में convert होता है। This change is endothermic. Now here heat is absorbed and there is increase in volume. Thus favorable conditions for the conversion of water into water vapor are high temperature and low pressure. Now solubility of a substance. When a solid substance are dissolved in water, either heat is evolved or heat is absorbed. दोनों तरह से होता है। Consider the dissolution of KCl. When this is dissolved, heat is absorbed. ये endothermic reaction है, इसमें heat absorbed होती है। In such case, solubility increase with increase in temperature. Consider the case of KOH. When this is dissolved, heat is evolved. दूसरे reaction में ये exothermic reaction है, इसमें heat evolved होती है। In such case, solubility decreases with increase in temperature. Now, solubility of gases in liquid. When a gas dissolved in liquid, there is decrease in volume, thus increase of pressure will favor the dissolution of a gas in liquid. Now we discuss on the chemical equilibrium. The results obtained by application of Le Chatelier principle to chemical equilibrium are the same as derived from the law of the mass action. Now for the formation of छोटा कर लेते हैं। For the formation of HI H2I2 जुड़ करके बनाते हैं 2HI प्लस 3000 किलो कैलोरी, यानी यहाँ पे एनर्जी जो है क्या है माइनस में आएगी। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। When now effect of concentration, when concentration of H2 or I2 is increased at equilibrium, the system moves in a direction which decrease the concentration, that is the rate of forward reaction increase, there will be increase the concentration of HI. Effect of pressure, as there is no change in the number of moles दोनों साइड बराबर हैं, the equilibrium state remains unaffected by the change of pressure. Effect of temperature, by increasing temperature, the equilibrium state shifts toward the reaction which moves with absorption of heat. The formation of HI is an exothermic reaction. Thus, the backward reaction moves faster when temperature is increased. In short, we can say that the favorable condition for the greater yield of HI, the high concentration of H2 and I2, and low temperature. Second, a formation of nitric oxide.
दिस इज द रिएक्शन। इसमें क्या है, -432 है, तो पहला वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, when concentration of N2 or O2 is increased, the system moves in direction in which N2 or O2 is used up, that is rate of forward reaction increase, thereby increasing the concentration of NO. Effect of pressure in the formation of nitric oxide, the number of moles remains the same both sides, that is no change in volume occurs. Consequently, the equilibrium state is not affected by any change in pressure. Now, effect of temperature. The formation of NO is endothermic in nature. If the temperature is raised, the equilibrium shift is in direction in which heat is absorbed. The concentration of NO will therefore be higher at high temperature. Thus, the favorable condition for the greater yield of nitric oxide are high concentration of N2O2 and high temperature. Now, dissociation of PCl5 is also an endothermic reaction. Now, effect of concentration, when concentration of PCl5 is increased at equilibrium, the rate of forward reaction increase as to decrease the added concentration, thus more PCl3 and Cl2 are formed. Now, effect of pressure, the volume increase in the dissociation of PCl5. When pressure is increased, the system moves in the direction in which there is decrease in volume. Thus, high pressure does not favor dissociation of PCl5. Effect of temperature, the dissociation of PCl5 is an endothermic reaction, thus the increase of temperature favors the dissociation. The favorable condition for the dissociation of PCl5 is high concentration of PCl5, low pressure and high temperature. Now synthesis of ammonia. N2 plus 3H2 exothermic reaction है, more huge quantity of energy release होती है, 22,400 कैलोरी। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज इंक्रीज, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज एज टू कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस, thus formation of ammonia increase. During the formation of NH3, effect of pressure देखेंगे, during the formation of NH3 a decrease in volume occurs. यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया बन रही है. When pressure is increased, the system moves in direction in which there is decrease in volume. Thus, high pressure help in the formation of NH3. Effect of temperature, the formation of NH3 is an exothermic reaction. Thus, low temperature will favor the formation of NH3. Thus, favorable conditions for the formation of NH3 are high concentration of N2 and H2, high pressure, low temperature. Although the formation of NH3 is favored at low temperature, the operating temperature kept in the Haber's process is about 500 degrees centigrade. This is because at lower temperature, the rate is extremely slow, even in the presence of catalyst. Hence, a suitable temperature is selected at which neither the yield is low nor the rate of the reaction is too slow. Now, formation of sulfur trioxide is also a exothermic reaction. The system is similar to formation of ammonia. Thus, the favorable condition for greater yield, high concentration of SO2 and O2, high pressure, low temperature. However, the operating temperature is kept around 450 to 500 degrees centigrade in presence of catalyst. Now, effect of catalyst on equilibrium. This is an important point. The use of suitable catalyst can increase the rate of reaction and thus it shortens the time which the reaction would take to reach the equilibrium position.
For reversible reaction, the catalyst not only increase the rate of forward reaction but also the rate of backward reaction and thus help in reaching the equilibrium position quickly. A catalyst cannot change the equilibrium position or equilibrium constant of the reaction. Thus, the relative ratio of concentration of product and reactant as desired by the equilibrium constant is not affected by the use of a catalyst. आप यहाँ ये एग्जाम्पल देखते हैं. It is well known that for the reaction H2 plus O2 तो liquid vapor बनता है water का. The equilibrium constant is 1.2 into 10 to the power 40 at 298 Kelvin. However, this equilibrium is never attained under ordinary condition because the reaction is extremely slow. The presence of a catalyst such as platinized asbestos, the reaction proceeds quite fast and equilibrium is attained quickly. Further, the value of equilibrium constant at 298 is found to be the same, that is 1.2 into 10 to the power 40, irrespective of the speed at which the equilibrium has been attained. Thus, the catalyst increase the speed of the forward and backward reaction to the same extent and the equilibrium constant is not affected. The reaction for which high temperature are not favorable can be made to occur at low temperature with the use of catalyst. For example, in Haber process, the yield of ammonia is low at high temperature and the reaction is slow at low temperature. Hence, by use of catalyst, that is mixture of iron and molybdenum, the rate of reaction is speeded up at low temperature to attain equilibrium quickly. Now, another important thing is effect of addition of an inert gas on equilibrium. The effect of addition of an inert gas, which the gas which does not react with any of the substance involved in the reversible reaction on equilibrium, can be discussed under different conditions. First, addition of an inert gas at constant value. When an inert gas is added to the equilibrium system and constant volume, then the total pressure of the system will increase. But the concentrations of the reactant and products are not affected. Hence, under these conditions, there will be no effect on equilibrium. Now, addition of inert gas at constant pressure. When an inert gas is added to the equilibrium system at constant pressure, the volume increases. On account of this, the number of moles per unit volume of the various reactant and product will decrease. In order to overcome this state, the equilibrium will shift to the direction in which there is increase in the number of moles of the gases. For example, SO3 when dissociate in SO2 and O2, the addition of an inert gas at constant pressure will shift the equilibrium to forward direction. Similarly, for the reaction N2, formation of ammonia, the addition of an inert gas at constant pressure will shift the equilibrium to the backward direction. यानी इधर की तरफ reaction बढ़ने लगता है, dissociation of ammonia होने लगता है. Now, some point to be noted. There will be there will be no effect of addition of an inert gas either at constant volume or at constant pressure on equilibrium of those gaseous reactions in which there is same number of moles on both sides. For example, mm, addition of inert gas has no effect on the equilibrium of the following reaction, as the number of moles of the reactant and product are same. Now, summary of the large atelier principle is given in this chart. इसको नोट कर सकते हो कि सारी चीज़ें जो अभी डिस्कस हुई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे सामने चार्ट में दी हुई हैं. तो दैट्स ऑल.
फॉर टुडे। आज की क्लास में ला चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में पूरी तरह से पढ़ा तुम लोगों ने, उसके एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है अब ये इक्विलिब्रियम में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा, और ला चैटेलियर प्रिंसिपल जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट ला है, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, आयनिक रिएक्शन में किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एसिड बेस है, पीएच स्केल है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है।